अस्सलामुअलैकुम। रात 12 बजे हैं और हालात की वजह से इतना मजबूर हूँ कि मुझे वीडियो बनानी पड़ी। और राइट नाउ आई एम हियर विद यू गाइस। आज हम बात करने जा रहे हैं अबाउट द करंट सिचुएशन ऑफ द वर्ल्ड। फ्रेंच रेवोल्यूशन आज के ज़माने की बात नहीं है, पुरानी ज़माने की बात है। फ्रेंच रेवोल्यूशन क्यों हुआ? अ बैड इकोनॉमिक स्टेट, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं थी। There was a very resistant, the resolve was not there, resistance बहुत ज़्यादा थी गवर्नमेंट की to reform, to rebuild, और साथ ही साथ bad governance और एक bad government from the leaders to the higher and upper lower class. All of these things, ये सारी बातें आती हैं और combine करती हैं the reason for why what happened in the great French Revolution. अब वो तो हिस्ट्री का सबसे बड़े रेवोल्यूशन और सबसे मोस्ट इन्फ्लुएंशियल रेवोल्यूशंस में से एक था। आफ्टर द फाउंडिंग ऑफ गोल्ड माइंस इन ब्राज़ील, द इन्फ्लेशन, द about a whopping 20+ million resident, or we can say peoples, like the amount of people that were born in just a fraction of a century. It was an amazing thing. It was an interesting thing, not an amazing one since it resolved the crisis and the whole French Revolution happening. But what happened was good for the future, and Allah Ta'ala knew what it was, or maybe whatever you wanna feel like it. Okay, French Revolution की तो हमने बात की, इसका क्या कनेक्शन है आजकल की सिचुएशन के साथ? Bangladesh, revolution that came into Bangladesh was by the students. They all reformed the government, and all the reasons were inflation or bad governance or resistance to reform. यही सारी चीज़ें सकम की, यही सारी चीज़ें वजह बनी to the downfall of the government of Bangladesh and to the creation or to the revolution that came into being from the Bangladesh by the hands of the young. Now Bangladesh is a country with a very different stat than us. हमारे statistics उनके statistics से बहुत ज़्यादा differed करते हैं। अच्छा, coming into that, पाकिस्तान के statistics क्या कहते हैं? More than half, or more than we can say only a quarter of our population is the other people, और बाकी लगभग 3/4 of the whole youth of the whole the whole population is youngsters. मतलब हाफ से ज़्यादा क्या, 4 में से 3/4 लगभग यूथ है, यंग लोग हैं, that are either students, that are either grown-ups, that are either kids or are among their 20s. Now ये हमारी यूथ का एक स्टेटिस्टिक आ गया। थिंक बांग्लादेश के अंदर जो रेजोल्यूशन और जो रेवोल्यूशन आया, व्हाई डिड दैट हैपन? किन के हाथों किया गया? दैट हैपेंड बाय द हैंड्स ऑफ नन अदर देन द स्टूडेंट्स, द यंगस्टर्स। यंगस्टर्स वो वाहिद कौम होती है, यंगस्टर्स वो वाहिद एज ग्रुप होते हैं जिनके पास इन सारी चीज़ों के लिए टाइम होता है और एफर्ट करने की ताकत होती है। फॉर एग्जाम्पल 30-year-old वो देख रहा है पाकिस्तान के हालात बुरे हैं, वो कहेगा मैं क्या कर सकता हूँ, बस बिल्स हैं, पे करेंगे, मजबूर हैं, वो दे सकम टू इट। बट यंगस्टर्स चूँकि उनके अंदर दे हैव द यंग ब्लड, दे थिंक के यार ये तो गलत हो रहा है। वो एक आप कह सकते हो ना, एक फ़िल्म के अंदर जब एक हीरो होता है वो कहता है यार ये गलत हो रहा है और मैंने ये सब कुछ बदलना है, वो वाला एक चाहत होती है यंगस्टर्स के अंदर। दे वॉन्ट टू चेंज, दे वॉन्ट टू मेक थिंग्स बेटर। बट उसी पर्सपेक्टिव के अंदर दैट्स व्हाट मैटर्स लॉट्स ऑफ टाइम्स। कमिंग इनटू अ रेफरेंस पॉइंट और कमिंग इनटू व्हाट वी वर टॉकिंग, youngsters are the reason for lots of times revolts, revolutions and differences in a place. Now Bangladesh didn't have any kind of civil war or something like that, but rather it more often or more than that, it had a revolt, it had a resistance, it had a strike, it had a, you can call it a momentum against the government and their traits. Now पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है? पाकिस्तान की करंट सिचुएशन के मुताबिक as far as we have seen, हालत बहुत ज़्यादा बुरे हो गए हैं। एंड पाकिस्तान इज़ नॉट द टाइप ऑफ कंट्री, अगर यहाँ पर नॉर्थ कोरिया, जिस तरह मैंने पहले कहा था नॉर्थ कोरिया की सिचुएशन होती है,
नो चांस. नॉर्थ कोरिया इज़ अ रिच कंट्री, पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा रिच है, बिकॉज इट डज नॉट कम इनटू दैट. हाँ, मैं कहता हूँ कि वो उसके ट्रेड्स और इम्पोर्ट्स नहीं है, बट इट डजंट मीन कि वो अपने हार्वेस्ट, अपने रिसोर्सेज उसके पास नहीं है. इट हैज़ इट्स ओन अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज एंड इट वर्क्स अपॉन दोज रिसोर्सेज वेरी एफिशिएंटली एंड वेरी मीनिंगफुली. नाउ बट पाकिस्तान, इट डजंट हैव एनी ऑफ दैट. नाउ फ्रेंच रेवोल्यूशन के क्या रीजंस थे, याद कीजिए. फ्रेंच रेवोल्यूशन के 3 रीजंस थे: रेजिस्टेंस टू रिफॉर्म, बैड इकोनॉमिक सिचुएशन और स्टेबिलिटी, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट बैड गवर्नेंस और बैड डिसीजन मेकिंग. पाकिस्तान में क्या हो रहा है? बैड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और बैड इकोनॉमिक सिचुएशन, रेजिस्टेंस टू रिफॉर्म, एंड ऑल्सो लास्ट बट नॉट लीस्ट बैड गवर्नेंस और डिसीजन मेकिंग. यहाँ पर हमें क्या इस चीज़ से समझ में आ रहा है? What happened is history is repeating itself every single time. सिविल वॉर नहीं था फ्रेंच रेवोल्यूशन में, ना ही था बांग्लादेश में, बट पाकिस्तान में I call it a full-fledged civil war. Why do I call it a full-fledged civil war, you may ask? Well, full-fledged civil war इसलिए क्योंकि a country is fighting within itself. Not between two parties of the army, not between two parties of the national federations, or not between two parties of the government upon a decision, but between the government and the audience, the people that they entertain, aka also known as the awam, the people of the country, the people under the government that live under their rule. Now the point is, all of this is happening and it's way worse than everything that we've seen so far. It's not something that common. हाँ, इस तरह तो नहीं है कि हम लोग जाकर, फॉर एग्जाम्पल फ्रेंच रेवोल्यूशन में जिस तरह रॉयल्स को, आई वोंट से दैट बिकॉज इट कैन गेट मी अ बिट इनटू प्रॉब्लम ऑन यूट्यूब एंड डिमोनेटाइजेशन प्रॉब्लम्स, बट वो जो कुछ हुआ हम सबको पता है, और द ऑनस्लॉट दैट हैपेंड एंड द इफेक्ट्स दैट इट हैड, द पेजेंट्स फाइटिंग द एलीट्स एंड द रॉयल्स. सेम चीज़ पाकिस्तान में तो हो नहीं सकती बिकॉज आर people are way ahead. What does happen is there is this civil war going on, a civil war between the people of the country and a civil war between the government itself. What this does is it revolutionizes our perspective of resources. हमारी गवर्नमेंट के पास है लगभग पूरे पाकिस्तान के रिसोर्सेज, हमारी आवाम के पास है कुछ नहीं, कुछ रिसोर्स नहीं है. डू यू थिंक आवर गवर्नमेंट हैज़? हम लोग देते हैं, लेते नहीं हैं. बिगेस्ट बिजनेसेस इन पाकिस्तान owned by army officers, biggest piece of lands in Pakistan owned by government officials, biggest cars or biggest technologies and biggest fundings got by anyone in the whole of Pakistan. Absolutely right. It is the government officials or the elite class, the advisors, the merchants, the rich people of Pakistan, the industrialists. अच्छा, अब यहाँ पर एक मेन चीज़ बात में आती है. ये जो एक सिविल वॉर चल रही है, इसका क्या इफ़ेक्ट हो सकता है, इससे क्या हो सकता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, अ फेयर शेयर ऑफ अ वार्निंग टूवर्ड्स पाकिस्तान. ये वार्निंग नहीं है कि मैं आपको थ्रेट दे रहा हूँ, बट इट्स रादर ऑफ अ वार्निंग कि क्या हो सकता है अगर इन चीज़ों का केयर नहीं किया गया. क्या होगा? वही जो फ्रेंच रेवोल्यूशन में होगा, वही जो बांग्लादेश में हुआ, बट उससे 10 गुना ज़्यादा सिवियर. बांग्लादेश डिड नॉट हैव द सेम इशूज एज पाकिस्तान सिंस द बिगिनिंग. जैसे ही वो आज़ाद हुआ, द थिंग्स वर वे मोर काम इन बांग्लादेश देन इट वाज इन पाकिस्तान. विद द असैसिनेशन ऑफ द फर्स्ट एवर प्रेजिडेंट, विद द असैसिनेशन, विद द सो कॉल्ड डेथ ऑफ कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एंड सो मच मोर. एक केओस था शुरुआत से. पाकिस्तान के बनने से पहले ही there was this कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना सिचुएशन और बहुत सारे और सिचुएशंस जो पटिशन लिखे गए फॉर पाकिस्तान क्रिएशन, उसके लोग नहीं आए पाकिस्तान की तरफ. द जनरल्स एंड द स्मार्टीज दैट रोड दैट पाकिस्तान शुड बी क्रिएटेड, दे नेवर इवन जॉइंड पाकिस्तान. द आइडिया ऑफ द कॉलोनाइजेशन ऑफ पाकिस्तान बाय द ब्रिटेन्स और हैविंग अ पीस ऑफ द लैंड by the Britons, and so much chaos that keep on ensuing. That's what caused all of this. Fair share warning. क्या होगा? मैं फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स की तरफ आता हूँ. राइट नाउ हमारे पास क्या हो रहा है? आई वोंट से दैट दे आर डूइंग बैड, बट व्हाट आई एम गोना से इज दे आर बीइंग इडियोटिक. हमारे लोग क्या कह रहे हैं? दैट दे वांट इमरान खान टू बी ओपन, टू बी फ्री फ्रॉम द जेल. द पॉइंट इज,
what is your plan? How do you plan on doing that? आपके पास क्या फोर्स है कि आप करें वो सब कुछ? अगर है, I want to see all of Pakistan's students together in this revolt against the government, and I guarantee you कि पाकिस्तान बदल सकता है. क्या आपके पास कोई प्लान है? मोस्ट लाइकली नहीं है. क्या आपके पास वो रिसोर्सेज हैं? मोस्ट लाइकली नहीं है. यहाँ पर 3 चीज़ें मेन इसके अंदर आती हैं. स्टूडेंट फेडरेशन, student organization and the student council or the student union. यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा that student federation of the students or the organization, which pretty much are the same thing at this point. They don't even have any differences. They may have major differences written, but they don't do anything different. आजकल तो ये भी नहीं पता लोगों को कि फेडरेशन और ऑपरेशन और फेडरेशन और हमारे पास जो स्टूडेंट और ऑर्गेनाइजेशन 2 डिफरेंट चीज़ें हैं. बट दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी. साउंड्स वियर्ड? यस इट इज़. they are doing absolutely nothing in the favor of students. Rather than that, वो एक गवर्नमेंट का हिस्सा है. नॉट हिस्सा, बट आई वुड से कि गवर्नमेंट फंडेड ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट फंडेड फेडरेशन है. इट डायरेक्टली वर्क्स अंडर द हैंड ऑफ द गवर्नमेंट एंड दैट्स व्हाई इट्स नॉट डूइंग एनीथिंग टू सपोर्ट द स्टूडेंट्स. नाउ यहाँ पर क्या आता है? स्टूडेंट यूनियन. एवरी सिंगल यूनिवर्सिटी और कॉलेज मस्ट हैव अ स्टूडेंट यूनियन, और वहाँ पर होंगे रिसोर्सेज. एवरी ईयर, एवरी मंथ और एवरी वीक देयर मस्ट बी सम रिसोर्सेज जो कि दिए जाते हैं टू द स्टूडेंट यूनियन. अभी चूँकि आई एम नॉट अ ग्रेजुएट माई सेल्फ, बट दिस इज़ अ कॉन्सेप्ट जो कि वेस्ट के अंदर और कंट्रीज मॉडर्न लाइक जापान के अंदर होता है. A certain amount of money, a certain amount of earning is given to the student union, and once they have that amount, once they have that money, वो students के लिए उनके मुख्तलिफ मसलों को, मुख्तलिफ मसले मसाइलों को फिक्स करने के ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं. They work on different perspectives. First of all, हम में से किसको ये पता है कि is there even a student union? Union होगा, काउंसिल नहीं होगा. देयर इज़ नो डिसीजन मेकिंग पार्लियामेंट इन द स्टूडेंट्स इन माई परस्पेक्टिव जो कि सही डिसीजन ले रही हैं. यहाँ पर किस फेडरेशन, किस यूनियन से अप्रूवल लिया गया है? नथिंग. और अगर इस तरह एक यूनियन है, उसका अप्रूवल नहीं लिया गया, यू आर मिसिंग आउट ऑन अ बिग थिंग. मुझे जितना यकीन है दे लाइकली अप्रूव ऑफ दिस strike, since it's the right of the students to ask for whom they prefer, whom they vote, whom they like, and to revolt against the government. It's their right. But if you guys are not ruling out, if you guys are not thinking about all the amount of money that you guys can actually refund, you guys can earn, sorry, not refund, but amount of money you guys can actually re-get, or you guys can actually earn by resources of the student council is impressively large. Is there a student council? Likely no. If there is no actual effort by the student council, different universities must have different student councils, but I'm not very sure about that since it seems like more of a western concept. स्टूडेंट यूनियन जी बिल्कुल होगा, स्टूडेंट यूनियन होगा, और ये जो स्टूडेंट्स निकले हैं ये सारे भी स्टूडेंट यूनियन का एक हिस्सा होंगे. अ प्लेस दैट जस्ट बेसिकली इज लाइक द ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स टुगेदर, and rather than being a union that actually makes good decisions, they just head outside. So I don't think it's the best of a decision. but अगर जिस तरीके से आप जा रहे हैं और अगर इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स निकलते हैं that we have the ability to overpower Pakistan's government, their army and everything, of course you can go for it. आप try कर सकते हो and you can maybe figure something out and you'll be able to do that. But other than that, I don't think there's anything to do. There's going to be updates coming up. Fair share warning, Pakistan is doomed. Government has worsened up, has fricked up big time, and it's not gonna get any better soon, and it's not possible, and that's the basics that we are getting. Thank you so much for watching, and Allah Hafiz.